onwards, all citizens, and to secure all citizens social, economic, faith and worship equality of, and of opportunity, and to promote assuring the dignity of individual, unity and integrity of the nation. and This 26th day of November 1949, give him a big hand. Who took over the Constitution was framed. It had 395 articles and 22 chapters, 12 schedules and 5 appendices. With the passage of time, there was enormous growth in the constitutional development. बेस्ट जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग थे उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की, जिनकी चेयरमैनशिप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने को सौंपी गई। संविधान को बनाते वक्त उन्होंने हिंदुस्तान के हर एक शख्स को कवर किया, हर एक के हुकूकों का ध्यान रखा, और ये संविधान ही है जहाँ से उनसे भी कोई इंडिया का हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बन सकता है। ये संविधान ने ही राइट दिया हुआ है, संविधान ने ही राइट दिया हुआ है जो हमें आज ये यूनिफॉर्म मिली हुई है, राइट था, सभी को नहीं था। As all of us know that we are observing 26th day of November 2020 as a law day, constitutional day. For the executive members, my brother judges, senior advocates, ladies and gentlemen, we are fortunate enough to assemble here today. As we know, our country had been divided into colonial systems which were governed by kings, and after conversing these states, India had got Independence Day on 15th of August 1947, and thereafter the leaders who were leading the agitation to getting the India free from English rule thought should govern the country. Baba Bhimrao Ambedkar was the chairman of the committee. That committee had been its number 293, and committee had 166 sittings to complete the document. And to complete this document, 2 years, 11 months and 17 days took place. Adopted on 26th of November 1949, which came into force on 26th of January 50. All of advocates who are learned men here might know that our Constitution of India has been borrowed from various countries: French, USSR, Irish, in all over world, having maximum articles, schedules, and languages which were more than 1761. And this document had been translated into 2 languages only, English and Hindi, and its handwritten documents are still lying in the parliament, kept safely. On this occasion, without taking much time, I extend my greeting to all
for the bar members, executive body of the bar members who have assembled here, my brother colleagues. The question mark put by Mr. Abras that some of the problems are not addressed here. I assure you that bar will take care of it. Any problem which is legally solvable, nobody can create any trouble in it. We are supposed to do it. No doubt time would be there. Either it should be quickly disposed or should be disposed of second or third day. But ultimately it has to meet its goal on a logical conclusion. Nobody should have personal grudges with anybody. We are doing public job and we are answerable to the. पونछ ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ मिलके बार रूम पونछ में कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया, जिसमें हमारे तमाम बार मेंबर्स थे, हमारे जजेस साहिबान थे, लिटिगेंट्स थे। कि उन आज इस दिन जो 26 नवंबर का ये दिन जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है, इस निस्बत में पूरे मुल्क में हर जगह पे प्रोग्राम हो रहे हैं। तो बार एसोसिएशन पونछ ने भी इस प्रोग्राम में, जिसमें डलसा पونछ के जो हमारे साथ उन्होंने भी तावन किया, तो हमने ये प्रोग्राम बार रूम पونछ में मनाया। और ये इस दिन की निस्बत से हमने लोगों को, मीडिया पर्सन को ये बताया कि आज का दिन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अडाप्टेशन का दिन है। आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडाप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1915 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसको हम 26 जनवरी मनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से तफसीलन से वकीलों ने, जजेस ने जो है वो सबको बताया गया है। और इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करें और सारा, ताकि हमारा जो है अच्छा सिस्टम चल सके। आज बार एसोसिएशन पونछ ने डलसा के साथ मिलके 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसे संविधान दिवस कहा जाता है, वो मनाया, जिसमें हमारी जजेस ने, एडवोकेट्स ने और बाकी हमारे कोर्ट के स्टाफ ने शिरकत की। इसमें आज सब ने एक अहद लिया, एक प्रॉमिस किया है कि हम सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो वैल्यूज़ हैं, जो इसके आइडियल्स हैं, उन्हें फॉलो करेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को हम अपहोल्ड करने के लिए एक ड्यूटीबद्ध तरीके से हम सब काम करेंगे। मैं जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन पونछ भानु प्रताप एडवोकेट आप सबको इस दिन की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय। मालूम है कि 26 नवंबर 1949 को we adopted this Constitution of India, which was later on enforced on January 26, 1950. And in that connection, throughout the country, we have been organizing Constitution Day today. In that connection, District Legal Services Authority Pونچھ also organized this program, wherein all the judges of District Court Pونچھ, President Bar Association, respected members of the Bar Association Pونچھ, and citizens of Pونچھ participated, wherein our learned speakers expressed their views. They highlighted the features of our constitution, and they resolved to ensure that we all should work to uphold the constitutional principles, constitutional values, and ensure that in every department, everywhere, whatever sphere we are working in, we should observe it